ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वासस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वखद्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवत्वमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मया त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममया त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं तैवेष्यति सर्वं जगदिदं तै प्रतीति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं वस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकं त्वां योगिनो ध्यायति नित्यं। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वार परतरा अर्धेन्दुलुसितं तारेण रुद्धम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चन्तरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहितासन्धि। सैषा गणेश विद्या गणकृषि निच्युद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवतः। ओम गं गणपते नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशामङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते विभादं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलेप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः पूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतसृष्ट्यादो प्रकृते पुरुषात् परम्। एवं ध्यायति नित्यं स योगी योगिनावरा। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमा प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदरा एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदमूर्तये नमो नमः। एतदतर्वशीर्षयोदिते स ब्रह्म भूयाय कल्पते स सर्वथा सुखमेधते स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते स पंचमहापापात् प्रमुच्यते। सायं धियानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति। सायं प्रातःप्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधियानो पविघ्नो भवति धर्मार्थ काम मोक्षं च विन्दति। इदमतर्वशीर्षाय न यदि मोहाद्दास्यति स पापीयान् भवति सहस्रावर्तनात् यं यं कामवदिते
तन्तन्तमनेन साधयेत अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्म्या भवति चतुर्थ्या मनश्नन जपति स विद्यावान भवति इत्यर्थवर्णवाक्यं ब्रह्माद्या वर्णन विद्यात न भेति कदाचनेति यो दुर्वाङ्कुरर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजर्यजति स यशोवान भवति स मेघावान भवति यो मोदक सहस्रेण यजति स वाञ्छित फलमवाप्नोति या साध्य समिद्भिर्यजति स सर्वलभते स सर्वलभते अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग्रा यत्वा सूर्यवर्चस्वे भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधो वा जपत्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति स सर्वविद् भवति य एवं वेद उपनिषदम् ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामदितमस्तु मा विद्विषावहै ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वासस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायु ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायु कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमत षष्ठमविकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्याया पठेन्नरा न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं शम्भिर्मासे फलं लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशया अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा या समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वः गणेशस्य प्रसादतः इति श्री नारद पुराणे संकर्षणाशनं गणेशस्तोत्रं संपूर्णम् देवादितु पुराण आत्मा जगासया अंतिम आसरातु तू जानतोषि तुझ मोक्षधाम विस्तारिसी विश्व अनंत रूपा तू अग्नि तू वायु समस्त देव प्रजापती तूची पिता वडील असो नमस्कार सहस्त्रवार पुन्हा पुन्हा आणि पुन्हा पुन्हाही समोर मागे सगळीकडेची असो नमस्कार जिथे जिथे तू उत्साह सामर्थ्य तुझे अनंत तू सर्व की सर्व तुझ्याची पोटी सद्गुरुनाथ महाराज की जय। देवादितू तुझी पुराण आत्मा जगासया अंतिम आसरा तू जानतोषी तुझ मोक्षधामा विस्तारिसी विश्व अनंत रूपा तू अग्नि तू वायु समस्त देव प्रजापती तूची पिता वडील असो नमस्कार सहस्त्रवार पुन्हा पुन्हा आणि पुन्हा पुन्हाही
समोर मागे सगळीकडेची असो नमस्कार जिथे जिथे तू. उत्साह सामर्थ्य तुझे अनंत, तू सर्वची सर्व तुझ्याची पोटी. सद्गुरुनाथ महाराज की जय. ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ती द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. काषाय वस्त्रं करदण्डधारिणं कमण्डलू पद्मकरेण शङ्खं चक्रं गदाभूषितभूषणाढ्यं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये. ध्यानमूलं सद्गुरोर्मूर्ति पूजामूलं सद्गुरार्पदम् मंत्रमूलं सद्गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं सद्गुरोर्कृपा. अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्म निवारणं ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं सद्गुरुपादोदकं पिबेत. कृते जनार्दनो त्रेतायां रघुनन्दनं द्वापारे रामकृष्णंच कलौ श्रीपाद श्रीवल्लभ. ज्या ज्या स्थळी हे मन जाय माझे त्या त्या स्थळी हे निज रूप तुझे. मी ठेवतो मस्तक ज्या ठिकाणी तेथे तुझे सद्गुरु पाय दोन्ही. अत्रिपुत्रो महातेजो दत्तात्रेयो महामुनी तस्य स्मरण मात्रेन सर्व पापय प्रमुच्यते. दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. ओम श्री गुरुदत्तात्रय श्रीपाद श्री वल्लभाय नमः. अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं.